ठीक है भाई, तो let's start with the chemical properties. In today's class we were talking about alkanes, so definitely we need to talk about chemical properties of alkanes. हमें किसकी बात करनी है बच्चों? We need to talk about chemical properties of alkanes. Okay, so if we talk about chemical properties of alkanes, so first of all you need to keep remember that in alkanes we have carbon, which is saturated one. Saturated one means the carbon has all four bonds over there, and when the carbon has all four bonds, it's difficult for the carbon to make such more compounds, right? अब एक कार्बन के चार बॉन्ड ऑलरेडी पूरे हो गए हैं तो वो दूसरे कंपाउंड्स बनाते में सोचेगा, और दैट इज व्हाई इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत कम होती हैं. ठीक है ना? तो वी जस्ट हैव two chemical properties in our syllabus. The one is combustion, and we know that combustion is you can say that कि यार ये जबरदस्ती का रिएक्शन है, आप आग लगाओगे किसी को तो डेफिनेटली वो रिएक्शन कर ही लेगा. Then we have substitution reaction, and I am just going to consider one more chemical property over there, which is cracking. This is not the part of chemical properties in our syllabus, but this is the part of our syllabus. But I consider this in chemical properties, right? ताकि मैं इसको यहीं आपको इसी वक्त इसके साथ समझा दूं. It would be easier for you, right? So let's start with the first one, which is combustion. Now, what is combustion? Combustion is, बच्चों, it is the burning of something, right? It is the burning of something. If you burn any substance, you need to keep remember that कि उसके elements oxygen के साथ binary compounds बनाएंगे. You need to keep remember this fact, right? What I'm saying, just look at over here. For suppose I have the first member of alkane family, which is methane. Definitely if you are burning this, so you are actually reacting it with oxygen, because in air we have oxygen which causes burning. You need to keep remember this कि oxygen जो है किसी भी चीज को burning में मदद करती है. अगर oxygen नहीं होगी तो burning नहीं होगी. ठीक है? Now what I am saying बच्चों कि कोई भी compound जब burn होगा तो उस compound में जो elements होंगे वो individually oxygen के साथ compound बनाएंगे. So बच्चों, can you please tell me how many elements we have in this compound? How many elements we have in this compound except oxygen? Yes, two. What are these elements? Carbon and hydrogen. Carbon and hydrogen. So what is the stable compound of carbon with oxygen? Carbon dioxide. Yes. And what is a stable compound of hydrogen with oxygen? It is water. So this is so simple. You can see this. Any type of equation you can write. If they talk about combustion, so any combustion equation you can write in this way if you have such compounds. Just look at over here. I just want to give you one example over here. For suppose you have a CH2S. For suppose you have this type of compound. So if I burn this in the presence of oxygen, what are the compounds that are formed? Carbon dioxide, water, and sulfur dioxide. Yes, water and sulfur dioxide. That's too good. Very good, बच्चों. शाबाश. अब जरा मुझे बताएं, what is the problem of sulfur dioxide and what is the problem of the combustion of this fuel? Greenhouse gas. Yes, no, not a greenhouse gas. Sulfur dioxide is actually acidic in nature, so it causes acid rain. It causes acid rain. So you can see this, बच्चों, इस तरह के सवाल वो आपसे पूछ सकते हैं. You need to be aware about that. So I just want to give you the best way to write equation, best way to write combustion equation. शायद ये किसी बुक में ना लिखा हुआ हो, शायद लिखा हुआ भी हो, but I don't know कि मेरे दिमाग में कहाँ से आया. लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब कभी भी किसी भी कंपाउंड को, किसी भी सब्सटेंस को बर्न करोगे, हमेशा उसके अंदर जितने एलिमेंट्स होंगे वो इंडिविजुअली ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड्स बनाएंगे. दैट्स इट, राइट? गॉट इट एवरी वन ऑफ यू? यस सर. नाउ वन मोर थिंग दैट यू नीड टू कीप रिमेंबर बच्चों. अब अगर हम इसकी बैलेंसिंग की बात करते हैं,
अगर हम इसकी बैलेंसिंग की बात करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात कर रहा हूं, अगर आप इसकी बैलेंसिंग की बात करते हैं तो ट्राई टू बैलेंस कार्बन फर्स्ट, right? Then hydrogen and then oxygen. Let's see how can we balance this. How many carbons we have? One. Over here we have one. Carbon is already balanced. Is that right? Yes, sir. Then how many hydrogens over here? We have four, and over Four. here we have two. So I can write two over here, and in this way hydrogen is also balanced, right? Yes. Then if we talk about oxygens, so right now we have two oxygens over here and two oxygen over here. So total we have four oxygen on the right hand side. So we can write two over here. In this way, the balanced over here, the equation is going to be balanced, right, bacho? So in this way, you can balance the equation for the combustion of alkanes or alkenes again, right? So let's talk about the second one. Just look at over here. If you talk about the second one, it is C2H6. If you are burning this in the presence of oxygen, so definitely again the compound is carbon dioxide and water, right? Right? Yes, sir. Okay, then how many carbons we have over here? Two. Two carbons. So we need to balance carbon first. We need to balance carbon first, and then we need to balance hydrogen. We have six hydrogens. So we need to write three over here, three plus six. Then we need to balance oxygen. So you can see this, it is two to the four and three ones are three. So we have seven oxygens over here. So you can even write 7/2 over here for the balancing. Because if you write 7 over there, so it should be 7 to the 14 oxygens, but we want half of that. So you can write 7/2. Okay. Okay, sir. Okay, so try to solve for propane, butane, and pentane. Just write down the balanced chemical equation for the combustion of propane, butane, and pentane. Quickly, incomplete combustion की अगर बात करें तो this is complete combustion, right? For suppose अगर हम incomplete combustion की बात करें तो you need to keep remember कि भाई incomplete combustion का मतलब ये होता है कि आपके पास complete ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं थी कि वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाती, ठीक है? you don't have excess oxygen for the complete reaction. आपके पास बहुत लिमिटेड है. It is only when you have limited oxygen. और सिर्फ इसी वजह से बच्चों हम लोग जो है अपने किचन्स जो है वो कैसे रखते हैं, ओपन रखते हैं, और इसलिए ओपन रखते हैं ताकि एक्सेस ऑक्सीजन का यूज हो सके और कार्बन मोनोऑक्साइड की जगह कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन सके. डेफिनेटली both are harmful. Carbon dioxide is a greenhouse gas and carbon monoxide is a toxic gas, but the problem is carbon monoxide is a sudden problem. वो फौरन ही प्रॉब्लम है हमारे लिए ना. So if it would be like can cause death on the spot as well. But carbon dioxide definitely it take time to just evaporate and then accumulate around the surface of the earth, then absorb UV lights and then radiate them back to the earth, and then global warming blah blah blah. वो लंबी कहानी 10 साल लग जाते हैं इन सारे कामों में. लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड इज एक्चुअली द प्रॉब्लम ऑन द स्पॉट. उसी वक्त की प्रॉब्लम है, हाथ के हाथ सॉल्व करनी है, ठीक है? फॉर सपोज अगर बिजली का बिल और गैस का बिल एक साथ आ जाए तो बिजली के बिल की डेट जो है आज की है और गैस के बिल की डेट जो है परसों की है, तो पहला वाला जो प्रॉब्लम है वो बिजली का बिल है, अभी भरना जो है वो बिजली का बिल है. तो कार्बन मोनोऑक्साइड इज द ऑन द स्पॉट प्रॉब्लम, वो वाली सॉल्व पहले करनी है. तो बस इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ओपन हाउस मतलब ओपन किचन बनाते हैं, ठीक है? ताकि वो जो किचन हो उसके अंदर ऑक्सीजन की कमी ना हो और कंबस्शन की वजह से आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड जनरेट ना हो. सेम एज इट इज जो हम जनरेटर्स वगैरह रखते हैं वो भी हम जो है ऐसी जगहों पे रखते हैं जहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड ना बन सके, ओपन एयर के अंदर कंबस्शन, ठीक है? सो लेट्स टॉक अबाउट दिस. एंड फॉर सपोज इफ you have methane and if you are combusting that in the presence of limited oxygen, so you need to see this that it will cause carbon monoxide to form, right? जब कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी तो उसकी वजह क्या होती है, लिमिटेड ऑक्सीजन. सो अगेन बैलेंसिंग में कार्बन पहले बैलेंस है, हाइड्रोजन बैलेंस कर दिया, and then oxygen is 2 plus 1, it is 3, and it is 3/2. So you can see this कि आपके पास 1.5 ऑक्सीजन यूज हुई है, and which is quite you can say that ये काफी कम है, ठीक है बच्चों?
Any problem to any one of you? No, sir. All clear? Yes, sir. आगे चलें? Yes. चलें, थोड़ा सा डिफिकल्ट करते हैं, थोड़ा सा कुछ चेंज करते हैं, ठीक है ना? अब देखें, फॉर सपोज बच्चों मेरे पास एक इक्वेशन है यहाँ पर। देखें, मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, चलें मैं यहाँ पर ना, फॉर सपोज आई हैव 10 centimeter cube of propane gas. For suppose I have 10 centimeter cube of propane gas, right? I combust this in the presence of excess oxygen, right? You can say that 10 centimeter cube of propane gas completely combust in the presence of excess oxygen, and also I am telling you the excess oxygen हमने कितनी यूज की in the presence of excess oxygen, और वो हमने कितनी यूज की 100 centimeter cube, right? नेट ये हमारे पास ये नेट सारी चीजें गिवन है, ठीक है ना? व्हाट इज द क्वेश्चन इज कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ carbon dioxide produced, and also I want calculate the volume of oxygen used, and also yes, I just want that oxygen remain, ये कितना बचेगा, तो ये सब कुछ हमें कैलकुलेट करना है, और also the total volume in the end of the reaction. So we need to calculate these things. अभी हम कैसे करेंगे? So for this, बच्चों, what we need to do, first of all, we need to write the equation for this. And what is the equation for this? We know that we have propane. When we completely combust propane, so definitely it will produce what? 3 carbon dioxide, 4 water molecules, and this is 5, right, bacho? This is the balanced chemical equation, and I think you all know that this is mole ratio. You all know that this is mole ratio. We can say that, bacho, ke 1 mole of propane required 5 moles of oxygen, and also produce 3 moles of carbon dioxide and 4 moles of water. We can say that, right, bacho? Yes, sir. Yes. Yes, every one of you, can we say that or not? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so I'm just giving you one more information over here. If you remember that all the gases in 1 mole having 24 decimeter cube volume, that means if you have 1 mole, so you have 24 decimeter cube volume. If you have 2 moles, then you have 48. So whatever the gas, it is not going to be change, right? All the time, 1 mole is equals to 24, 2 moles is equals to 48, 3 moles is equals to 72. That means when you are increasing the number of moles, then the volume is going to be increased. They are same in ratio. So we can consider that for gases, mole ratio is always equals to the volume ratio as well, but it is only at room temperature and pressure. But it is only for room temperature and pressure. And if you talk about room temperature and pressure, so it is liquid, and these are gases, right, Vacho? So we can even say that, we can even write directly over here without using mole ratio. We can even use in the centimeter cube as well. We can say that 1 centimeter cube propane can use 5 centimeter cube of oxygen to produce 3 centimeter cube of carbon dioxide, but we cannot use this because it is liquid, right, bacho? Yes, sir. So you need to keep remember this from now onwards, that you can directly apply the volume ratio if you have gases, right? If you have gas and you need to find out the volume of gas from product side, so you can apply a volume ratio directly, right? And one more thing is, what is the condition given to us right now? The condition is we have 10 centimeter cube of propane gas. We have 10 centimeter cube of propane gas. So what is the difference between 1 and 10? It is into 10. So if you are going to multiply with 10, so you need to multiply all of them by 10. So 5 into 10 will give you 50 centimeter cube, and 3 into 10 will give you 30 centimeter cube. So you can see this, if you have 10 centimeter cube of propane,
so definitely it will produce 30 centimeter cube of carbon dioxide. You can say that volume of carbon dioxide produced is 30 centimeter cube. You can see this. What is the volume of oxygen used? Volume of oxygen required used is actually 50 centimeter cube only. To complete reaction, to complete the reaction, actually 10 centimeter cube of propane required only 50 centimeter cube of oxygen. So why you are using 100? It is actually excess, right? Volume of oxygen remain kitna hua? In the start, you use 100 centimeter cube and it uses 50 only, so the remain is 50. So what is the total volume in the end? So the total volume in the end is actually the carbon dioxide produced and the oxygen remain. So at the last of the reaction, when the reaction has been ended, so you will have 80 centimeter cube of gases, right? Carbon dioxide and oxygen remain. Is that right, every one of you? Total volume नहीं समझ आया. टोटल वॉल्यूम देखो, आपके पास 10 सेंटीमीटर की प्रोपेन थी, वो तो कंप्लीटली कंबस्ट हो गई होगी, तो वो तो गायब हो गया होगा पूरा वॉल्यूम, ठीक है ना. फिर आपके पास 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑक्सीजन थी, उसमें से 50 यूज्ड हो गई, तो वो भी खत्म हो गया होगा. तो बची कितनी? वो जो आपके पास कंटेनर में जो बचा होगा, वो ऑक्सीजन जो बची हुई होगी वो होगी, या जो कार्बन डाइऑक्साइड बना होगा वो होगी. गैसियस वॉल्यूम ना, बाकी तो लिक्विड पानी होगा ना, पानी तो लिक्विड होगा, तो गैस नहीं है. तो सर इसका वॉल्यूम नहीं हम लोग लिख सकते? नहीं, वो लिक्विड होगा ना, हम गैस के वॉल्यूम की बात कर रहे हैं. Okay. ठीक है. So this is the question, बच्चों. You need to solve this, and in the next example, you need to make 10 into 15, and you need to convert propane into pentane. And if you have 200 centimeter cube of oxygen, so you need to calculate each and every variable over here. जैसे कि मैंने किया है, same as it is. आपने वही सारी चीजें calculate करनी है. Question is change. जल्दी से इसको आसान. Bacho, if you are going to write the equation for the hydrocarbons, there we have one journal equation as well. Just look at over here. अगर आप equation लिखते हो क्या? Yes, you have C3H8, right? When you are combusting this in the presence of oxygen, bacho. So we know that how many carbons over here? 3. So you are writing 3 carbon dioxide over here. It means कि अगर आपके पास कोई भी हाइड्रोकार्बन में जितने भी कार्बन्स हो, we always have the same number of carbon dioxide produced over there, right or not? Yes, sir. And then you can see this, that over here you have 8 hydrogen, and all the time you are going to make it half, and then you are writing water molecules. So you need to keep remember, whatever the number of hydrogens you have, all the time the half of this will be the number of water molecules, right? And then you are balancing it. 3 2s are 6 plus 4 1s are 4, then it will be 10, and then half of this will be 5, like this, right? And for this, I'm just giving you one formula for this. You can use this, it will make it easier, right? You can see this, y over 4, it is 8 over 4 is 2, 2 plus 3 gives you 5. So you can solve this directly. So this is what? This is journal equation of combustion, okay? And it is only for हाइड्रोकार्बन्स. इट इज ओनली फॉर हाइड्रोकार्बन्स. और आपने याद रखना है कि ये बस आपके लिए मैंने बनाई है, आपकी आसानी के लिए मैंने बनाई है, और ऐसा ये आपके सिलेबस में कहीं आपको नजर नहीं आएगी, शायद आपके स्कूल टीचर ने भी आपको ना कराई हो, तो ये आपको ऐसा नजर नहीं आएगा, लेकिन ये मैंने आपको इसलिए कराई है ताकि आपके लिए एमसीक्यूज आसान हो सकें. कैसे आसान होंगे एमसीक्यूज? जस्ट लुक एट ओवर हियर. फॉर सपोज इफ यू हैव you have 10 1 centimeter cube of following compounds: C4H10, you have C4H8, you have C3H6, and you have C3H8. We have these 4 compounds, and they gave you that कि भाई आपके पास 10 centimeter cube है ये सारा, बताएं इनमें से कौन है जो मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा, मैक्सिमम. तो अब क्या करोगे आप? नॉर्मली एक बच्चा क्या करेगा, जो कि सिंपल बच्चा होगा, वही क्या करेगा, पहले तो उसकी बैलेंस इक्वेशंस लिखेगा, उसके बाद जाके जो है वो उसको सॉल्व करेगा, हो सकता है वो तुक्का लगाए, ठीक है ना. बट आपको पता है कि भाई जब ये कंबस्ट होगा, तो ये वाला जब कंबस्ट होगा तो इट ऑलवेज फॉर्म 4 कार्बन डाइऑक्साइड. जब ये वाला कंबस्ट होगा तो इट ऑलवेज फॉर्म व्हाट? 4 कार्बन डाइऑक्साइड. जब ये वाला कंबस्ट होगा तो इट ऑलवेज फॉर्म 3 carbon dioxide. You know that whenever this combusts, it always form 3 carbon dioxide. And you also know that कि भाई इनका relation 1:3 का है, तो अगर ये 10 होगा तो ये 30 होगा, अगर ये 10 होगा तो ये 40 होगा, है ना.
इनका रेशियो 1:3 का है और 1:4 का है। तो ये 40 प्रोड्यूस करेगा, ये 40 प्रोड्यूस करेगा, ये 30 करेगा, ये 30 करेगा, तो सबसे ज्यादा ये दोनों करेंगे। राइट बच्चों? यस सर। तो इस तरह आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है, चले ये तो दूर की बात है। दूसरा, अगर वो ऑक्सीजन का पूछ लेता है तो यहाँ प्रॉब्लम हो जाती है ऑक्सीजन में ना। अब आप क्या करेंगे, आप पहले सबको इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, फिर ऑक्सीजन लगाएंगे, सबको बैलेंस करेंगे, फिर ऑक्सीजन लगाएंगे, बहुत लंबी हो जाएगी आपके लिए। आसान तरीका क्या है, ये x है, ये y है, हम क्या करेंगे, x प्लस y/4 ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो पहले वाले में क्या हुआ, 4 और 10/4, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, 4 4 16, 16 प्लस 10/4, इट विल गिव यू 26/4। एक का आंसर आ रहा है 26/4, एक का आएगा 8/4, ये हो गया 2, 2 प्लस 4 गिव यू 6, एक का आ रहा है 6, एक क्या हो गया आपके पास 6/4 प्लस 3, 3 4 12 प्लस 6, 18/4 आ गया एक का आंसर। एक का आंसर क्या आएगा आपके पास 8/4 प्लस 3, तो ये हो गया 5। तो देखिए हमारे पास ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए ऑक्सीजन के ना। 26/4 क्या होता है इसको देख लेते हैं। 26/4 आपके पास होगा 26/4, इट विल गिव यू 6.5, ये आपके पास 6.5 है, और 18/4 आपके पास है कितना, 4.5, ये आपके पास 4.5। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास आ गए हैं नंबर ऑफ मोल्स, ये 1 मोल के रेफरेंस से आ गए हैं। यानी कि अगर 1 मोल आपके पास C4H10 होगा 1 मोल, सो इसको चाहिए होगी ऑक्सीजन 6.5। अगर इसका 1 मोल होगा C4H8 का, तो आपको चाहिए होगी 6 मोल्स ऑक्सीजन के। अगर C3H6 का 1 मोल होगा, so you requires 4.5 moles of oxygen, और अगर आपके पास C3H8 का 1 मोल होगा, so you require 5 moles of oxygen. So it's simple for you now. You can see this कि अगर ये 10 होते तो it should be 65, अगर ये 10 होते तो it should be 60, अगर ये 10 होते तो it should be 45, अगर ये 10 होते तो it should be 50. So you can see this, which one requires the maximum amount of oxygen, the first one. So you can solve this it very easily अगर आपको ये वाला पैटर्न आता होगा तो। इट इज ओनली फॉर द एमसीक्यूज, क्योंकि हमें पता है एमसीक्यू सॉल्व करते वक्त हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा होता है, और उस 1 घंटे में हमें 40 एमसीक्यू सॉल्व करने होते हैं, एंड यू कैन मैक्सिमम गिव 1.5 मिनट फॉर ईच एमसीक्यू। वो बात अलग है कि सिंपल वाले आसान वाले और मॉडरेट वाले अलग होते हैं, तो वो आपका टाइम सेव कर लेते हैं, बट we need to use or we need to fill bubble sheet as well, so it require time as well। ठीक है ना? तो ये सारे काम को करने के लिए आपके पास टाइम बहुत कम है, और 1 घंटे में जब आपको सब कुछ करना है तो आप इतना मेहनत नहीं कर सकते इस एमसीक्यूज में कि पहले आप चारों की इक्वेशंस लिखें, चारों को बैलेंस करें, उसके बाद आप चारों के ऊपर जो है इंडिविजुअली मोल रेशियो और वॉल्यूम रेशियो लगाएं। सो इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर यू। तो मैंने उसको आसान करने के लिए ये जर्नल इक्वेशन का यूज किया है। तो आप इस जर्नल इक्वेशन को यूज कर सकते हो ताकि आपका एमसीक्यू, इस तरह के जो लंबे लंबे एमसीक्यू हो, वो मैक्सिमम 1 से 1.5 मिनट में सॉल्व हो सके। इज दैट राइट बच्चों और नॉट? यस सर। एनी प्रॉब्लम? नो सर। चलें हम देखते हैं एक सवाल इसका एमसीक्यूज में, जो मैं आपको क्यों इतना एम्फेसाइज कर रहा हूँ। If you see the MCQ number 1, bacho, they are saying compound S and T both contain 2 elements only, and when the compounds are going to be, we have some following properties of this. They both burn in air to form carbon dioxide and water. That's fine. इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास हाइड्रोजन और कार्बन का कंपाउंड है ये। they both react with chlorine by substitution. Now it's confirmed कि ये आपके पास alkanes हैं, क्योंकि alkanes can only show substitution reaction. And then S has a higher boiling point than T. S का boiling point ज्यादा है, so S contain more carbons, right? So देखें ये जो ANE लिखा हुआ है, it is going to confirm that ये alkane है, ठीक है ना? ENE अल्केन नहीं हो सकता, ENE अल्केन नहीं हो सकता, क्योंकि अल्केन आखिरी में ANE आ रहा है। तो ये वाला आंसर हो सकता है आपके पास, या तो आपके पास ये वाला आंसर हो सकता है, ये दोनों नहीं हो सकते। पहले तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया। देन अब इन दोनों में से कौन सा राइट आंसर होगा, ये थर्ड स्टेटमेंट आपको बताती है। मोर कार्बन्स एस में होने चाहिए। तो प्रॉप का मतलब होता है 3, इथ का मतलब होता है 2, सो इट मींस सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है? And then question number 3 is saying each of the compound W, X, Y, and Z is either an unbranched,
alkane or an unbranched alkene. Now this is the part of alkene as well. You can see this 9 and 18. So it is the double of, you can say that it is actually the double of carbons. When the carbon and hydrogens are double of carbons, so it will be alkene, right? And when this is double and plus 2, then it will be alkane, right? When this is double, it is alkene. Right? When this is double plus 2, it is alkane. So it is now clear. Which two compounds undergo an addition reaction? Addition reactions is only the property of alkenes. So the right answer will be W and Y. The W and Y is the right answer is A. Is that clear, bacho? Yes, sir. And the seventh one is the same thing, but I'm not going to do this right now. I'm just watching for that जो कि अभी हमने solve किया है और वो कहाँ गया combustion वाला. Let me see. अच्छा बच्चों, इसमें खैर मुझे फिलहाल नजर नहीं आ रहा है वो, लेकिन अब हम जब